मैं यहाँ से अभी बैटरी प्रॉब्लम होगा बैटरी Hello, आप सभी को नमस्कार, good afternoon, and I request all the faculty members and students to take their respective seats as the program is going to start within few minutes. Thank you so much. Hello, everybody, sir. Am I audible? सर आपके पास
म्यूट करके रखो, म्यूट करके रखो। ऑटो एडमिट फट कैसे गया? ऑटो एडमिट नहीं हुआ। एक्सटेंशन ना इसमें डाउनलोड नहीं, अगर करेंगे तो आप कर सकते हैं। अभी तो बोला अभी इसमें चेक करो। हाँ, एक्सटेंशन इसमें डाउन वही सेम आईडी है सर। Hello. I request all of you to please maintain silence as the guest is very shortly arriving. जो लोग पीछे बैठे हैं प्लीज आप बताइए कि आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं, फिर आ रही है? आगे वाले से पूछिए आवाज आ रही पीछे वाला के तो आता ही आवाज पीछे वाला सुनना नहीं है इसलिए तो पीछे बैठा है सुनना होता तो सामने बैठता ना सुनना नहीं है इसलिए बैठा है इधर नहीं पिज्जा अभी कितना निकलना आगे से चोरी चोरी क्या चोरी चोरी क्या नहीं वो तो ब्रेक पकड़ के निकलना कोई नहीं बोल मोबाइल में सुन सकते हैं ऑनलाइन लगा हुआ आगे आ जाओ Hello. Please take your seats. Namaskar and good afternoon everyone. A very warm welcome from IQAC and English Department, Govt Digvijay Autonomous PG College, Rajnandgaon, on the 4th day of 5-day national workshop on NEP 2020 Curriculum and Research Reforms. I, Dr. Rajnandgaon, extend greetings of hospitality to our eminent speaker of the day, Dr. Rahul Digvijay, Assistant Professor from Arts and Science College, Rajnandgaon, Maharashtra. I am happy to extend
warm and cordial welcome to our patron and principal, respected Dr. K.L. Tandikar sir. I express deep gratitude and hearty welcome to the convener and HOD, English Department, Dr. Anita Shankar ma'am, IPSC Coordinator, Dr. Anita Saha ma'am, and Organizing Secretary, Dr. Neeru Srivastava ma'am. I also take the opportunity to gladly welcome respected members of Organizing Committee, all the teaching fraternity, students and participants in online mode. To welcome is to show honor, to welcome is to show love and hospitality. Now it is time to move on with bouquet presentation to our honorable guest seated on the dais. May I request Sakshi and Ludwig to come. I invite respected principal sir to welcome our guest, Dr. Rajnandgaon sir, with bouquet. I invite convener of this workshop, respected Dr. Anita Shankar ma'am, to welcome respected principal sir with bouquet. I invite IQAC coordinator, respected Dr. Anita Saha ma'am, to welcome Dr. Anita Shankar ma'am with bouquet. Thank you so much. I invite Sakshi Shukla to pin the badge to our guest Digvijay sir. As you all know that today is the fourth day of this national workshop. In a nutshell, I would like to give brief summary of previous 3 days technical sessions. The inaugural session of the workshop started on 17 April, which was virtually graced by the Honorable Vice Chancellor Dr. G.D. Sharma sir from Meghalaya. In his speech, he talked about the salient features of NEP 2020, AI and visions of collaborative learning and future possibilities. In the first technical session, we got the golden opportunity of enjoying lecture of keynote speaker Professor G.A. Ghanshyam. In his address, he focused on the holistic development of education, overall development of students. According to him, NEP 2020 is focusing on quality and skill-oriented education. On the second day of workshop, we were enlightened by the lecture of eminent speaker Dr. G.G. Banik from Govt. Professor Banik delighted lecture on NEP 2020, prospects and challenges, quoting Swami Vivekananda's views and philosophy on education. He said that the aim of NEP 2020 is to empower everyone. On the third day of technical session, we were addressed by very dedicated and dynamic resource person, Dr. Sheetal Verma ma'am from JNU. She delivered her talk on NEP 2020 highlights and major challenges. In her presentation, she discussed that NEP 2020 is very good initiative, but a big challenge is that how we are going to bring things under one umbrella together. Her paper presentation was very interesting. She also emphasized on the role of teachers. Before I start today's technical session, I would like to introduce the veteran speaker
of the day, Dr. Rahul Digvijay. He has 25 years of teaching experience. In his research supervision, 4 scholars are working and 2 have successfully completed their research. Dr. Digvijay is UGC Research Awardee. He received research fellowship from IASC. He worked with A.K. Shukla, IISc Bangalore. His 15 research papers are published in RSC, ASC and in many other reputed publications. His 4 research papers of UGC are completed worth 20 lakhs. Presently, he is working on innovative research project of DST worth 20 crore. His 6 books are published. He has delivered more than 20 invited talks at state, national and international level on research and NEP 2020. He has visited in collaboration with NUS Singapore. Ladies and gentlemen, it is a privilege to have such renowned, learned and veteran personality among us today. Very humbly, I invite Dr. Rahul Digvijay sir for his lecture. The topic of his lecture is Multidisciplinary Approach of NEP 2020. Sir. हेलो 5 डे नेशनल वर्कशॉप के आज चौथे दिन हमारे बीच विषय विशेषज्ञ के रूप में आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज पारनेर अहमदनगर महाराष्ट्र, ये सरका कॉलेज पूना से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। उतनी दूर से 24 घंटे का सफ़र तय कर यहाँ पहुँचे हैं। हम सबके लिए, महाविद्यालय परिवार के लिए यह बहुत सुखद संयोग है कि डॉक्टर दिग्विजय सर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अपना एक बहुत ही प्रेरक और सारगर्भित व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हैं। आप सबको विदित है कि छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के 8 स्वशासी महाविद्यालय में इसी सत्र से नई एजुकेशन पॉलिसी की अवधारणा को क्रियान्वित करने के प्रथम चरण में शुरुआत हुई है और इस वर्ष से 8 स्वशासी महाविद्यालय में जो पाठ्यक्रम, सेमेस्टर पाठ्यक्रम और क्रेडिट बेस्ड चॉइस पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। मैं दिग्विजय सर को सबसे पहले हमारे महाविद्यालय में उपस्थित होने के लिए आप सब की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आप उपस्थित हुए। कुछ दिन पहले सर के महाविद्यालय में 1 दिवसीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर वर्कशॉप था और उसमें मुझे भी एक एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया गया, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से कार्यक्रम लगातार
चल रहे हैं तो समय नहीं मिल पाया। मैं सर से व्हाट्सएप में तो क्षमा मांगा था सर, अभी भी आपकी क्षमा प्रार्थी। आपके प्रिंसिपल साहब ने भी बहुत रिक्वेस्ट किया था। तो सर आपके प्रिंसिपल सर को महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर हमारा संदेश उन्हें दीजिए। सर का मेरा परिचय व्यक्तिगत रूप से फेस टू फेस नहीं हुआ था। जब कोरोना की परिस्थितियां थी, हम डोंगरगढ़ में लगातार नेशनल इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन कर रहे थे, तो मैं केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर हैं मध्य प्रदेश परासिया में, सर वही है महानी जी, मैं एक एक्सपर्ट की तलाश में था। तो हमने हमारे एक मित्र को फ़ोन किया, उन्होंने एक प्रोफेसर महाने जी का नंबर दिया जो परासिया में है। हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे मध्य प्रदेश। तो महाने जी किसी काम में व्यस्त थे, उन्होंने सर का नंबर दिया। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे एक्सपर्ट का एक विषय की जानकार के साथ साथ समग्र विषय की जानकारी दिग्विजय सर रखते हैं। बहुत से मुद्दों पर हम लोग आपस में चर्चा करते हैं प्रोग्राम के संबंध में। कुछ दिन पहले सर व्यस्त थे और पूरी कॉलेज के नेक मूल्यांकन की प्रमुख भूमिका डॉक्टर दिग्विजय सर की जिम्मे थी और उन्होंने बखूबी इनका निर्वहन किया। मुझे एक अनुमान के तौर पर सर ने कहा था कि सर हम B++ नए सिस्टम में B++ की तैयारी में है। और उन्होंने सिर्फ ये एक इच्छा ही व्यक्त नहीं की, बल्कि आप सबको बता दूं कि अभी नेक मूल्यांकन हुआ है और सर का कॉलेज A++ की श्रेणी में है। आप सबको इस उपलब्धि पर धन्यवाद देते हैं। और हमारा एक ये कहिए कि जो मार्गदर्शन है, सशक्त मार्गदर्शन, अब हमको उस स्तर तक पहुंचाने में सर का मिलेगा। हम कल्पना में हैं सर, अभी कल्पना में जी रहे हैं कि A++ आएगा। हमारे सभी साथी बोलते आएगा, मगर वो आएगा नहीं, उसको लाना पड़ेगा। उसके लिए आपका सहयोग मिलेगा। सर ने प्रॉमिस भी किया है कि जहाँ कहीं भी कोई ऐसी उनकी आवश्यकता हो तो हमको अपने उद्देश्य तक, लक्ष्य तक पहुँचने में एक सशक्त ये प्रतिभा कहिए दिग्विजय सर के रूप में मिली है। आप अभी उनके उद्बोधन को सुनेंगे, इस विषय पर तो आप सुनेंगे ही। सुबह मेरी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बहुत सी जानकारियाँ अपने कॉलेज की मुझे ही बताई। तो मैंने कहा ये आपको सब कहाँ से पता है? मैंने आपके कॉलेज के वेबसाइट से लेकर सब सर्च कर लिया। अब आप सोचिए, और उसमें भी बहुत सी कमियां हैं, तो सर उसको भी हम पूरा करें। कल वर्कशॉप हुई, कमिश्नर मैडम ने 8 स्वशासी महाविद्यालय की कंट्रोलर प्रिंसिपल की लगभग 5-6 घंटे तक वर्कशॉप चली और उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर फोकस है। और मैं समझता हूँ कि हमारी IPEC की टीम, उनके कन्वीनर और उनके साथी इंग्लिश डिपार्टमेंट ने संयुक्त प्रयास से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर प्रदेश में छोटे मोटे कार्यक्रम तो हो रहे हैं, पर आपने 5 दिन का उनकी कार्यशाला विभिन्न विषयों को लेकर आयोजित की। ये शुरुआत है और नेक के लिए भी बहुत आवश्यक है, जैसा दिग्विजय सर बता रहे थे। तो मैं धन्यवाद दूंगा IPEC की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनीता साहब, उनके सभी साथी, हमारे IPEC के इंग्लिश विभाग के विभागाध्यक्ष अनीता शंकर मैडम, इंग्लिश डिपार्टमेंट के सभी प्राध्यापक, और विशेष रूप से इस 5 दिन की कार्यशाला को भौतिक रूप से और आभासी पटल पर पूर्ण रूप से
सफल बनाने में सर हमारी पूरी फैकल्टी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी कुछ परीक्षाओं में साथी लगे हुए हैं, बाकी 100% हमारी उपस्थिति फैकल्टी की है। तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता दूं सर कि जैसे मैंने कहा कि ये महाविद्यालय, तो सर ने कहा कि 1957 में शुरू हुआ, राजा दिग्विजय दास जी ने डोनेट किया। तो हमने कहा आपको कहाँ से मालूम? बोले मुझे सब कुछ पता है। तो सर आप तो सर्वज्ञ जानकार हैं विषय के, फिर भी मैं ये बता दूं कि यह महाविद्यालय में सर 19 विषयों में स्नातकोत्तर और लगभग 26 विषय के स्नातक फैकल्टी सब्जेक्ट संचालित है। 108 से 110 फैकल्टी विभिन्न विषयों में कार्यरत हैं। हमारे प्राध्यापक 32 के लगभग प्राध्यापक रिसर्च गाइड हैं। 10 विषयों में रिसर्च सेंटर है और लगभग 75% प्राध्यापक हमारे PhD हैं, MPhil तो PhD, नेट सेट। तो स्टाफ हमारा वेल क्वालिफाइड है। आगे आपका मार्गदर्शन मिले कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और छत्तीसगढ़ का यह बड़े महाविद्यालयों की श्रेणी में आता है, गौरवशाली महाविद्यालय है। हमने पहली बार 1957 के बाद पहली बार हमारे विज्ञान विभाग के प्राध्यापकों ने एक बहुत साहसिक कार्य किया। 3 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार को आभासी पटल पर नहीं बल्कि ऑफलाइन सफल बनाया, जिसमें चीन, ओमान और उज्बेकिस्तान ऐसे 4-5 कंट्री के प्राध्यापक आए। एक नया वातावरण क्रिएट हुआ। कॉमर्स इकोनॉमिक विभाग ने, राजनीति विभाग ने, हिंदी विभाग ने नेशनल सेमिनार अभी 2-3 महीने के अंदर ही संपन्न कराया है। लगातार वर्कशॉप 5 डे, 3 डे, 7 डे, फैकल्टी डेवलपमेंट और ये कहिए कि स्किल डेवलपमेंट, बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत आवश्यक है, इस पर आपका आज व्याख्यान होना है। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपको कि कुछ नया आपसे सीखने को हमें मिलेगा। थैंक यू। Good morning, once and all. In your mind, there will be a question. Right now, it is half past or quarter to 1 is there. How it is good morning. As being a social human or humanity, to whom we always follow. We always follow on American people. In the American literature, in the entire day, at any time, at first sight, we meet. At that time, you always welcome as a good morning to front side. This is first time I meet you, therefore I say that is a good morning. A small correction is there. When I listen my biodata, I have experience of 25 years. Still I am an assistant professor. I am not assistant professor. I am actually professor. I have promoted professor in 2010. But due to the technical problem of government of Maharashtra, roster problem, it is still assigned as assistant professor. Right now I am a professor. Leave it. Whether I am assistant, associate or professor, that doesn't matter. What it matters? It matters all the things, and that is going to observe by the
assessment and accreditation process. As far as my introduction to our honorable principal, how it is introduction has been made, the story has said already. What kind of story is there? The story is there, I went somewhere as a resource person, particularly in the Himachal Pradesh University, to talk about the chemistry. My specialization is related with the physical chemistry, and you may find, you may know, you may aware, the physical chemistry people are very less into the entire nation. To speak about the quantum chemistry, they have invited me, and at that time, that Vane sir has met me, and then my journey has started to visit number of universities, number of colleges as a invited. That is the outcome of that. I act as a role of resource person there, and that refresher course. The important thing, what we are going to discuss right now. In front of you, you may observe, I have just kept one of the slide. In that slide, I have quoted, I have just pasted the picture of your college. What is the imagination about this picture? You can say that imagination just like it is one of the old building is there, just looking like a fort. In Marathi it is called as a killa. Whenever the fort has came or the killa has came, that has some big histories. During discussion, sir has told me, this building has donated by one of the great legendary from Chhattisgarh. His name, it is given to the college. That sir has told me. And when, as being a resource person, there are the number of searching are there. When you invited me, at that time I went for the search. At that time, the first thing, sir has told, I work as a major source to have the accreditation, A++ college, that is a 3.5 CGPA is there, 3.54 CGPA is there for our college. In that system, entire system, the criteria number 6, governance, leadership and management, it is more important criteria. Through that criteria, you can represent at all the sides of the college, in all matter, in all aspects, in all criteria. Therefore, that 6 criteria, it is more important. Whatever you are going to do, that can do only by the criteria number 6. In that point, there is a 2 plans are there. One, it is a short-term plan, and another, it is a long-term plan. During discussion, I told the sir, it is a killa or it is a fort. Why not you are going to apply for a special grant from the government of Chhattisgarh? Because there is a college, it is a very old college. You have to make safe. To make safe, you have to have the grants. Then and then you can give the more intention to that college, and it will become, that is a safe. That is about my, just you can see that it is my just a suggestion to you. So it is a invited talk, that is the National Education Policy 2020. It is a multidisciplinary approach is there. After that is a national conference is there. Somewhere it came, that is a national seminar, workshop, the conference, seminar and workshop. It is all are the synonymous to each other. Don't consider it as a workshop. It is just, you can say that it is a conference. Organized by internal quality assurance sake of your college. During that is a discussion with ma'am, IPSC ma'am. They have written first site as a Department of English and then IPSC. I have made urge to her, just make the small correction. The first has came, that is a IPSC everywhere. After principal, the main role, it is concerned with the IPSC. And what kind of
IPSC is there, that IPSC it must be functional. It must be functional. The IPSC has given the suggestion to make the organization regarding introduction of NEP among the staff, among the students. You have organized, the Department of English has organized, therefore everywhere just make the correction. First side you have to write the IPSC. IPSC is more important everywhere. Not only that is the lethargic IPSC is essential. That is the ideal functional IPSC is more important to have the gradation. Therefore you have to write the IPSC. The second, just you can observe. Yes, sorry. The good suggestion is there. The suggestion it is accepted. Sir has asked to me, may I request to speak in Hindi. No. I will speak heterogeneous way. I can speak 4 kinds of the language: Marathi, Hindi, English, and additional unique my identity is there. I can very nicely speak Kannada also. So I can make heterogeneous. But the difficulty, more difficulty I feel to speak in Hindi. But I can speak Marathi and Hindi. And you can understand what kind of Hindi is there. Don't consider it is the meaning it is changed. So आप समझ लीजिए थोड़ा बहुत. मैं बहुत अच्छा हिंदी बात नहीं कर सकता लेकिन समझ सकता हूँ. आनी ही चाहिए हिंदी. मैं तो महाराष्ट्र में मराठी चलता है. आपको मालूम है सबको क्या हो रहा है महाराष्ट्र में. और अगर राज ठाकरे साहब का नाम लिया तो वो बोलेंगे उधर जाके मराठी में क्यों नहीं बात किया, हिंदी में क्यों बात किया, ऐसे पूछेंगे वो. तो वहाँ पर मेरे को आंसर देने के लिए नहीं आएगा लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत बोल सकता है. सो जस्ट टेक अ फन. द थिंग इट इज दैट एट द presentation you can find I want to make point. Just so, first side, I have shown that is the preamble of the logo of your college. The college it is not alone. It is affiliated one of the university and that university logo it is essential to quote. So both logos are I have kept. Now the question it is arises, one word it went at upper side, where am I? मैं कहाँ पर हूँ आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में. तो देख लीजिए आपका ये ब्रोशर है. सब ब्रोशर में मैं किधर नहीं दिखूंगा आपको क्योंकि मेरा ओरिजिनली ब्लैकिश हूँ इसलिए आपको मैं नहीं दिखूंगा. लेकिन किधर तो है फाइंड आउट करेंगे जब वो टोटल आपका ब्रोशर आएगा. और ब्रोशर में आपको कहाँ तो छोटा सा फोटो दिखेगा मेरा और फोटो यहाँ पे. So here you can say that I am here. Actually that photo it is so old because right now I am feeling I am old. You can look to me. So it is old. Therefore at the upper part of my head it is crosses. But I am here. So I want to show it. Here I am here. The next, as far as our college it is concerned, there is a core objective of the conference is there. Or the workshop is there. Everyone has the objective. Without objective, you can't do. There is a, you may have in the college, in the criteria number 6, there is a vision, mission and objectives are there. There is some vision, it has been decided of your government. Mission, it has been decided of your government. But objectives are not decided, they are changing as requirement is there. So, what is the core objective of the conference is there? Just I went, sir has told, I search all your college activities and in this case you can find there is a objective of your college. You may aware about it.
the entire whatever in this link is there, the program is there, it is from your college. This is the objective. What is the objective? Under NEP, students can be changed in logical, creative, more thinking, so that students can get technical, practical knowledge. Before entering in this hall, there was a placement cell has organized one of the program. There is an interview are conducted. What happens among the students or among the teachers? What is the logic behind to have the education? They are always thinking, if we have the education, we should have the job. That is not condition. That is not condition. In 1986, Rajiv Gandhi Commission has came. In that commission, they have called there is a delinking of education and job. What is the objective of education? To have the education to become a good man. That is the only objective of the education. So whatever the objective, already I think you have changed because the NEP has came in 2022, it is started. Right now it is not started, it is going to implement in 2023. And accordingly you have changed. And this can percolate in the mind of NEP. You have to remember it. This indicates that you are concerned, you are in preparedness for the NEP policy. So we have taken. Now then, outline of my talk. The outline of my talk, it is related. If it is possible to make the arrangement slides, because every word is Thank you. So outline of my talk is there. I have divided my talk in 4 sections. The first section I have mentioned, that is a brief scenario of Indian education in the world. The second, you can say that it is pre-NEP. In the case of pre-NEP, just I have shown one of the funny diagram. The funny diagram, you can say that is a stone bird or pigeon. And in that funny diagram, you can find just wear a cap, a green cap is there. And he is free to move anywhere. तो ये फ्री है, ये कहाँ पर भी जा सकता है. लेकिन पोस्ट NEP के बाद क्या होगा? तो पोस्ट NEP के बाद ये होगा. उसको लगेगा एक बड़ा एडिशनल कैप लगेगा, उसके बाद उसको स्पेक्टेकल लगेगा, उसको यूनिवर्सिटी या कॉलेज उसको अच्छा सा डाल देकर उसको सत्कार करेंगे. ये पोस्ट NEP के बाद. और उसके बाद what is important? The extensive holistic approach is there. In that case, there is one of the word I have kept alone. I have not included here. And that word, you can say that it is a multidisciplinary approach. That is more important. And that is the objective of my talk. Multidisciplinary. Holistic approach is there. And after that, okay, you have that is the extensive multidisciplinary holistic approach. What is the conclusion? The conclusion, it is very important. And in the case of conclusion, what we have, I have not written C properly, C-O-N, just I have keep high. There is, I have not written that is a I-N, inclusion, conclusion. Why? Because that we don't know what will happen after any event. So it is a, you can say that it is just keep in high position. So what will be happen? That is, right now we will not make any kind of the conclusion. Now after that, first thing we are concerned with the pre-NEP. India, world's best educational center. How it is proved. So you can find there are the n number of universities are there. The first university has came, that is of Nalanda, when it is established in 5th century. Then Taxila, right now it is in Pakistan. The another Vikramshila, all these universities are there. I want to share one of the things in the last, before 2 months back, one of the great legend from the NEP office, Bhushan Patwardhan, he is an alumni of our college. He has resigned from the NEP director. You may read somewhere. Why it is, when news anchor has asked the question to him, why you are resigned? At that time he made the statement, I am opposing to the foreign universities. Why? He has given the answer
The answer it is that he want to make sustenance to our older universities with fully funded upgraded universities. And because of that, government has not shown any kind of the intention to give funds for the older universities, and because of that he resigned. But there are the number of propaganda has came in the newspaper, but the main propaganda it is related to sustain, to strengthen the older universities, and because of that he has given the resignation. So after that, this is you can find there are the n number of universities are there. These are the pictures of the universities that you can say that is the older universities. There is a, you can say that India's ancient universities. It means that is the older universities are there. And at the right side, I have shown that is another picture. The another picture it is related. Archaeological Survey of India has been started in 2009, and under the Kalera project, all these universities are going to re-innovate right now. Under the Kalera project is there. All these universities are going to came into the focus to make the renovation under that project. This is about the scenario of our educations. Now, what is after that? After that ancient educations, there is a initial days are there. That initial day there is a Gurukul education system is there. And in the Gurukul education system, you can find there are the education is manifestation for the man that is given by that is a great philosopher, that is nothing but the Swami Vivekananda. And this is the situation at the initial day whenever the education has been started. And what is the scenario before independence in India? The scenario of before independence in India, that is of, you can say that at the end of 18th century and in the beginning of 19th century, Britishers identified education is a necessity in India. Therefore, the first college in India, it is referred as a Hindu college. It is established in 1870 in Calcutta. Then, Governor General of East India Company, Warren Hastings, bound to give the information about kind of education implemented in India to British Parliament. What is the aim? The aim, it is particularly I have put here. To generate the army clerks, because they are essential to human resources to do the work. Therefore, they are interested to make the army clerks. Now, Lord Maccallum has been implemented education policy in India in the year 1835. This college before that, 1870. They have established 1835. Then, whatever it was the Mount Stewart Alcester, who ends the Maratha Emperor, promotes education in English in India. Then, whatever the university has came in our India, there is one of the rule is there. The rule it is started, it is given by that Woods rule. It is given in 1854. Then Calcutta University has established in 24 January 1857. I want to share one of the important things regarding this Calcutta University. After independence or before independence, in the science, there is only one Nobel laureate is there. His name it is a C.V. Raman. There is only one Nobel laureate is there. His name it is a C.V. Raman. Apart from that, the identity of this Calcutta University right now, what is the identity? In India, almost 8 Nobel laureates are there as today. Out of that 8 Nobel laureates, 5 Nobel laureates are from this Calcutta University. These are the alumni. That is the outcome of Calcutta University. You can count it. Up to Amar Sen, they are the alumni of this Calcutta University. After that, there is a Bombay University that is established in 18 July 1957, then Madras, and then one of the things I have quoted here, 18th July 1946. It is a unique identity I have given. Why it is? What is it? The unique identity of this number, the first university has been established in the state of Madhya Pradesh. The date, it is of 18th July 1946.
right now it is referred as a Sagar University. It is the first university from Madhya Pradesh. Then number of people are work. Then Gopal Hari Deshmukh, particularly in Maharashtra, he works. It is referred as a Lokitwadi. Then Vishnu Shastri Chikrundkar, it is referred as a modern Shivaji Maharaj. Also welcome to the English education. In Bengal, there is a Raja Rammohan Roy, Pandit Vidyasagar and Swami Vivekananda work on the English language. And in Punjab, Swami Dayanand Saraswati, he has established Arya Samaj. Under that, his work. And in Maharashtra particularly, there is a Bal Shastri Ambedkar, Mahatma Phule, Maharishi Karve, Gopal Ganesh Agarkar, Gopal Krishna, and then Shahu Maharaj. The outcome of Shahu Maharaj has given that is a fellowship to Dr. Babasaheb Ambedkar, and you may aware that what is the outcome of that fellowship which has given Shahu Maharaj to Dr. Babasaheb Ambedkar. He wrote that is our preamble, you may aware. And one of the thing I have kept, that is a blank in the yellow set. Why it is? In Chhattisgarh, one of the great legend has started the education. The education has been started, that is of Digvijay Dasji. He has started the education, and I am proud. I feel very honored because you are invited to me to deliver my lecture in a college whose name it is given by Digvijay. So I feel very proud. Now after that, after independence, there is a pre-NEP is there. Now here from there is a pre-NEP has started. I know you may get bored, but you have to adjust it. There is a hot condition is there, but I feel, मैं समझता हूँ कि आपको NEP समझना है तो ये सब आपको मालूम होना जरूरी है, इसलिए मैंने ये ले लिया। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आप समझ लिए इंडिया में खाली 3 ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। एक आया 1948 में, दूसरा आया 1986 में और तीसरा 2022 में। उसका इम्प्लीमेंटेशन 2020 में हुआ, लेकिन उसका चालू अभी तो 22 में हो रहा। तो बाकी के जो की कमीशन है वो सब अमेंडमेंट्स है, वो पॉलिसीज नहीं। Amendment and policies are different. You have to remember it. So, number of amendments has came. What are that amendments? We will see. The first University Education Commission, it came in 1948. What is the need? What needs independent India? The need. First Prime Minister of India promotes science and technology education. In May 1950, IIT Kharagpur has been established. You may find what is the outcome of that 1950 IIT Kharagpur right now. You may aware the alumni of this IIT Kharagpur is Sundar Pichai. Right now he is the CEO of Google. It is the outcome of this IIT Kharagpur. Then in 1961 NCERT has been established. There are the number of state and central level organization has been started, colleges has been started. First NEP has been started, it is in DS Kotari. It is established in 14th July 1964. For what purpose? Implemented by at present Prime Minister Mrs. Indira Gandhi in 1968. For what purpose? For promotion of moral education, especially for primary and high school education. Then in the case of first NEP, after NEP, there are a number of people are work. That is Vinoba Bhave. He worked on the Suraj education policy. Then Mahatma Gandhi, Nai Talim education policy has been started. The second NEP has came in 1986. That I have mentioned right now. It is came by the name of Rajiv Gandhi education policy. What is the outcome of that education policy? It is important to know the outcomes. Everywhere the outcome it is important. In the case of NEP, they are searching what is the outcome to establish your college, what is the outcome of chemistry department, what is the outcome of all kinds of the departments, what is the outcome of this building, what is the outcome of this entire scenario of your college. Such kinds of the outcomes are important. The outcome of first NEP, you may aware, the moral education has been started for the secondary as well as primary level. And after that, in the case of 1986, second NEP has came. What is the outcome? You may find throughout India,
whatever it will be, the administrative officers are there, IAS officers are there. They are from the rural. All they are from the rural. How it has identified? Because in the Rajiv Gandhi Commission, what they have found, they have found that is a finding of poor but brilliant students from rural India. And the outcome is that they have established Navodaya high schools at every taluka places. And because of that, there is a Navodaya rural universities has been started, Navodaya high schools has been started, rural universities has been started, open universities has been started. In that case, there is IIT, biotechnology, IIT, nuclear technology has been started. These are the outcomes of that education policies. In 2002, there is the 86th amendment that is related to the right to education. Everyone has the authority to have the education. That came not by the policy, it has came by the amendment. That is the 86th amendment is there. Then we move towards the present national education policy. Characteristic of national education policy NEP 2020 is there. That is our more to understand, that is a multidisciplinary approach of the education. What is the present status of third NEP? It is a third NEP, national education policy. At that time, it is new, therefore somebody can say that it is a new education policy. But for this, don't use the word new. It is national. National it is there. That is not new. So national education policy, ये national education policy ही है. ये new बोलना ही नहीं है. कहाँ पर भी new बोलना नहीं. क्योंकि अब education लेके अभी कम से कम 1940 से 1948 से एजुकेशन पॉलिसी चालू हो गया है. अभी तक हमको वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, इसकी दिक्कत होती है. बहुत बार कहाँ पर भी लोग बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी. न्यू नहीं है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में था उस टाइम में भी उसको भी न्यू बोला था. उस टाइम में वो न्यू था, वो मालूम नहीं था इतने लोगों को. 1948 में भी जो आया वो भी उस टाइम में न्यू था, वो मालूम नहीं था लोगों को. अभी तो हम लिटरेट है, हम इलिटरेट कम है लेकिन लिटरेट ज़्यादा है, तो उसका प्रॉपर वर्ड मालूम होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए हर एक आदमी नेशनली बोलना है. व्हेन इट स्टार्टेड फ्रॉम 2014 अंडर द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इसरो के कस्तूरी रंगन. बेसिकली ही इज अ साइंटिस्ट एज वेल एज टीचर. ही taught the space science into the very great organization that is nothing but the ISRO, Indian Space Research Organization. It is located in the Bangalore. He is a teacher there. Commission has made 70 unions, more than 210 education facilities, legendaries from the educational system. Spent 4 to 5 years. Policy has been approved in the cabinet on 29th July 2020. It is approved in this meeting. It is a cabinet meeting, in the cabinet meeting. Then it is started to discuss into the Lok Sabha, then it is started in the Rajya Sabha, and then President has approved. Then the policy will be started in 2023. One of the things during NEP they have asked, have you started the education policy, new education policy? Many people say that yes, we started it. It is started in the month of June 2023. It is probably, it is not decided, depends upon that respective governments or the respective affiliated university. Still it is not started. It is we are under preparedness of NEP, not started the NEP. So NEP will start in June 2023. Probably that depends upon the authorities, administrative factors of that university or that colleges, whatever the things are there. So remember that. One of the things I want to quote here, Farid Zakaria, Indian education taught hard work. What is this? You may aware a great legendary from the education of America. His name, it is a Farid Zakaria. One of the news anchor has been asked the question to him, what do you find the difference in between Indian education and American education? He has been nominated by Padma Bhushan in 2010. Farid Zakaria, he has given the statement, the Indian education taught to hard work. Indian education taught to hard work.
and American education taught to think, and he has made the appeal. If the hard work and thinking power has came, we will become the leader of the world. We are isolated to do the hard work. There are a lot of hard works are there. Right now you sit here, just you have to find how much temperature is there. It is more, maybe it is more than 40. But you are listening to me, a very hard person, a dry person. It is a hard work. What he expected? He expected that the Indian education must be moved towards the thinking. And because of this only statement, he has nominated, he has awarded the Padma Bhushan. I want to say one more important thing regarding that is Farid Zakaria. Farid Zakaria is the son of Rafiq Zakaria. Rafiq Zakaria was the Human Resource Minister of Government of Maharashtra. You may be aware, there are the two Mumbais are there. One, it is a old Mumbai and another it is a new Mumbai. The entire new Mumbai has been established by his father, Rafiq Zakaria. And one additional thing I want to share with you, one of the cities there in Maharashtra, Aurangabad, it is close to Marathwada. In Aurangabad, the Guinness Book World Record is there. In a 6 month, maximum industries are came into the Aurangabad. It is in the 6 month, more than 1,000 industries are came into the Aurangabad. That is a world record has been created by that Aurangabad, and the Aurangabad it is also established by Rafiq Zakaria. Farid Zakaria is the son of that Rafiq Zakaria. That I want to say because the Maharashtra has developed by the Aurangabad as well as New Mumbai. So I want to say that point to you. Then what is the NEP 202 includes? Keywords. There is a equal integrated curriculum. That is, the integrated curriculum means what? There is an interdisciplinary. Then holistic. Not be one size fits all. एक ही टाइप का नहीं होना चाहिए, हर एक टाइप का होना चाहिए. उसके बाद उसका पेडागोजी कैसा है, उसका स्ट्रक्चर, पेडागोजी मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, 5+3+3+4. How it is? There is a foundation, preparatory, middle school, and then secondary school. Then NRF, National Research Foundation is there. There is a 20,000 crore will be made available. Funds for the research. Here, many staff members are asking whether if NEP has been started, the workload will be supported or not. That is a big question is there among the teacher. And they said that they are opposing to implement the NEP throughout India. What is the reason? The reason it is that the workload should not be maintained in the colleges. And if the workload should not be maintained in the colleges, the government will not allow to fulfill the post. That is the first thing. And the second thing is there is a more chances of the surplus is there. It means that you can shift from one college to the another college. That is the, you can say that phobia in the mind of people. And they are opposing to the NEP. That is not true. The thing it is that the government is ready to make the availability of 20,000 crore rupees as a research funding. The people those are working in the research field, you have to remember that during the discussion, sir has made to discuss about the research. Research is more important. You go anywhere in the world. Only research just making copy and paste, it is not sufficient. That is one important thing. To make copy and paste, it is not sufficient. And another thing is that UGC has given some UGC care list. That is also not accepted by the NEP. The NEP says that it is okay to make the documentation. That doesn't have the H index and Scopus index. They expected, NEP expected much more about the Scopus index. The Scopus, what is the meaning of Scopus index? The Scopus index, it is the journal that is nominated, how it is generated, how it is created. That journal, it has been assessed by more than 10 master reviewers. More than 10 master reviewers, sorry.
वो जो पेपर आप सबमिट करते हो वो पेपर कौन देखता है, इसके ऊपर वो स्कोपस इंडेक्स डिसाइड रहता है। वो पेपर कम से कम 10 लोग देखे तो उसको स्कोपस इंडेक्स में जाता है। वो कौन सर्च करता है? गूगल सर्च इंजिन है। तुमको कहाँ पर भी अपलोड करना नहीं रहता, कुछ भी कहाँ पर भी देना नहीं रहता। वो गूगल स्कॉलर जो है, गूगल स्कॉलर में भी वहाँ पर अपने आप वो आ जाता है, तुमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं। तुम्हारा पेपर पब्लिश हो गया, पब्लिश होने के बाद वो पेपर दूसरा आदमी ने देख लिया और उसको साइट किया तो उसका साइटेशन वो गूगल सर्च फाइंड आउट करता है और वो गूगल स्कॉलर पे आ जाता है। जिसका गूगल स्कॉलर रहता है उसमें भी साइटेशन रहता है, उसमें भी आइटम इंडेक्स रहता है, उसमें भी एच इंडेक्स रहता है। नैप उतनों को भी सब सेम नहीं, वो बोलता है स्कोपस इंडेक्स निकाल। तो स्कोपस इंडेक्स निकालना है तो आपको एल्सवेयर पब्लिकेशन में लॉगिन करना पड़ेगा। जिसका जिसका जीमेल अकाउंट नहीं है वो निकाल लो और जीमेल अकाउंट निकालने के बाद वो स्कोपस में अपने आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे और अगर आपका पेपर साइट हो गया है तो अपने आप आ जाता है। बहुत सारे स्टाफ लोग बोलते कि नहीं मैंने किया है, वो आया नहीं, क्यों नहीं आया मालूम नहीं, ऐसा वैसा बोलते रहते हैं। वो सही नहीं है। सही इतना है आपका, और अगर पेपर साइट हो गया है, कहाँ पर देख लिया है, किसने साइट किया, किसने रेफर किया, तो गूगल सर्च इंजन है। ये तो गूगल का क्या रोल है आपको मालूम है कि उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने आप ढूंढ लेता है। वहाँ पर स्कोपस इंडेक्स वहाँ पर आ जाता है, सबको ये डेटा Then there is a national tutor programs are there, that is concerned with the teachers. Then what is the important thing in 2023? Compulsory NEP is going to implement. There is one of the things is there that you can say that there is a special education zone, SEZ. What is it? There is all kinds of education at the same place, at the same umbrella, and under for that you may aware, you may know that is a cluster universities are going to form, cluster colleges are going to form, and some contradiction is there. There is a discrimination is there. Suppose one subject is going to taught in this college and another supposed to another city. Then how you can manage it? They have given the program. They have prepared all the programs. They are ready to implement it. So don't worry. How will you implement it? That is not a problem. So school, colleges are work together with special emphasis on their speciality with the student and teachers. Then teacher-student ratio reduces to 1:25. Right now it is goes to 1:69 throughout India. They are planned to reduce it up to 1:25. Right now, what is the scenario of our total India? There are around 800 universities are there. And if suppose that 800 universities where you are going to implement NEP, that will converted into the 15,000 universities. And what is the compulsion? The compulsion is that only 40 colleges are affiliated to each university. Only 40 colleges are affiliated to each university right now. Suppose you are going to have that is a Savitribai Phule Pune University. This university has affiliated more than 750 colleges right now. Out of that, 350 colleges are academic and remaining rest of the colleges are professional. Most of the colleges, particularly in Pune University or jurisdiction of the Pune University, they are professional, and academic colleges are only, that is about 350. That is a scenario right now into the Savitribai Phule Pune University. After implementation of the NEP, that will reduce only about the 40. And what kind of the institutes are there? There is the research institute is there, academic and research institute is there, autonomous universities are institutes are there. And after the important thing is there is no need to have the affiliation of any university. The college itself has called that is a autonomous university or the autonomous college. Whatever into the curricula they have designed, they can implement it. What is the expected? The expected thing is there, you have to give the outcome.
to the society, to the community. That is important. So the thing affiliation, it is cancelled. What is the hierarchy? That is the hierarchy. If good marks in 12, you can say that there is a science, commerce, arts. If good marks at 12 science, there is a medical, building, BSc are there. Then Mission Nalanda, Mission Takshashila, I have mentioned right now, the great million has been given the reservation because of this concept. Then there is a quality assessment at the NHEQF, that is the National Higher Education Qualification Framework is there. Then student skill assessment, National Skill Qualification Framework. Student must have at least one. International education, international educations are there. The foreign universities will come into the India. But the problem is that Indian universities cannot be sustained, cannot compete to the foreign universities. International university centers are there. It should be sustained and it should be competed. For that, there is a 360-degree assessment is there. For the to sustain, to make the competition with the foreign universities, to sustain and compete, you should make the assessment at the student level, at the teacher level, at the institute level, or at the state level, at the university level. Therefore, 360-degree assessment is there. How will you make the assessment? The assessment, student himself will be made assessor, his or her friend will be assessor, peer team will be assessor, and teacher themselves will be assessor. As like this, you can make the assessments. To maintain quality of education, there will be NERA, National Higher Education Regulatory Authority. You may aware this is one of the NERA, it is the most important organization is there. It is just like in 1991, telecom sector gives TRAI. It is a Telecom Regulatory Authority of India. It works, and because of that 2G, 5G, that some issue has came. How it is? They have came because of this TRAI. As like that, in the Indian education, they are going to form, that is a NERA. It is one of the important aspect of NEP. Then UGC remained as, it is a renamed as a HEGC, Higher Education Grants Commission. There is a GER is there, that is a gross enrollment ratio, pre-primary and school 100% enrollment, 2 crore childs for the central and state universities will be enrolled. There is a Atmanirbhar concept that we have discussed right now. There is a Atmanirbhar concept is there. In future, there is a vocational and ITI will not do work. That is as per the guidelines of any. There is a Lok Vidya Commission. There is a local need-based education is there. Then Adult Education Commission is there. Constitution Amendment 86 that has been. One of the things I want to put here. Before there are the 14 languages are there. Right now it became that is a 23. Yesterday. You may aware in the world there are the two kinds of revolutions are there. One it is a French Revolution. For what purpose? For the war and peace is there. There is a revolution given or made by the Leo Tolstoy. And another revolution, it is a Russian revolution. For what purpose? It is a fine and punishment. Fine and punishment. For what? There is a inter-language development is there. Inter-language development is there. How it is? Yesterday, there is a, just find out, yesterday there is a circular which is given by the UGC. What is the circular is there? This circular it indicates that even though you studied chemistry in the English, you have to write your answer in your mother language. That is a freedom, it is given by the UGC. The issue has been given yesterday and today in the Maharashtra. They has published into the leading newspaper. माध्यम इंग्रजी असले तरी मातृभाषेत उत्तरपत्रिका लिखून द्या UGC. मतलब क्या है, आपका टीचिंग मेथड इंग्लिश में रहेगा, फिर भी आप अपने लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं. UGC ने कल ही लेटर भेज दिया 19 April, today is 20. So after that, one of the diagram I have taken, that is the Indian Institute of Teacher Education. Right now there is no particular education system for the teachers. There is no training programs. As at the college level, there is the FDP is there, RC is there, OC is there.
they are conducted autonomous colleges or they are conducted by the university level. But in the under NEP, when NEP has been started, there is an Indian education of teacher education infrastructure will be developed. I know most of the teachers and participants are getting very nice slab. You can have. ये आपको फ्रीडम है, आप लीजिए, जिसको सोना है जरूर सो जाइए, आपका फ्रीडम है वो, लेकिन एक काम करना, आप घूरना नहीं, घूरना नहीं, वो फ्रीडम नहीं दिया है, क्योंकि घर में भी वो फ्रीडम नहीं रहेगा। समझ लो आप घूर रहे हो तो आपके पास, आपके सामने, आपके आजू बाजू में कोई नहीं सोता, वो बाहर जाके सोता, ये घूरता है आदमी इसके साथ। तो घूरना नहीं है, सोना है तो जरूर सो जाओ, मैं इधर रखूंगा चालू, जब आपको लगेगा देखना है तो देख। So here the funny thing it is that one of the institute I have shown, that is the Institute of Teacher Education. It is in the Gandhinagar. It is the most fundamental education organization for the teacher. It came under any that Indian Institute of Teacher Education, then Science, Language, Communication. That all that points discussed earlier. Then there is a RSA, Rashtriya Shiksha Ayog is there. There is a PM, Prime Minister, Honorable Prime Minister was the chairman. Then MPhil in future it is cancelled. Agriculture, law and medical has not came into this NEP. Remember me. There is another commission is there for the agriculture education, law education and medical education. It is an independent out of NEP. So no curricular and extracurricular get cancelled in future. All that is the points included into the NEP. This is after 1 year complete, one certificate course, 2 diploma, 3-year degree. That we discuss into the future. This is some scenario that I have given. After that, we came our important objective of today's lecture. Here I have taken. Before that, what I have discussed? I want to share some points related with the NEP. Because of that, I have taken initially as a pre-NEP and post-NEP. You have to consider it, whatever you like it, keep in your mind. If you don't like it, keep here and leave it. No problem. So, extensive multidisciplinary approach, NEP 2020. In the NEP amendment, there is a point number 11 is there. Here, one of the important word I have put, that is nothing but the team. Right now, in the last month, this month, we had the good accreditation in the NEP 3.5. How it has came? Because of teamwork. It is not a work of principal, it is not only work of IPSC coordinator or NEP coordinator or co-coordinator. It is entirely the teamwork is there. The team is what? Togetherness, everyone achieves more. You have to work together. You have to work together. That is the important thing. Therefore, in our college, whenever we are going to have the gradation or the accreditation, we decided, we work as a team. There is no competition. And one thing you have to consider, in the case of our destination, quality is never be destination. It is a continuous process. Quality, it is never be destination. It is a continuous process. And to have the continuation, you should have the teamwork. Whatever it is the NEP has came in our mind, or the government of India has decided to change the NEP of 1986, how it has came? It has came one of the Kadambari, that is a Banbhat Kadambari. What is included in that? It is included more than 64 kalas. 64 kalas. Where it is included? It is included in this Kadambari. It is Kadambari in case of English you can say that is a novel. It is in Hindi you can say that it is a Kadambari. Who was the Banbhat? You may have a. It is not a Bali Brahmabhat. You may have a who is Bali Brahmabhat. There are the number of movies are there. In the case of movies, he is a poet writer, Bali Brahmabhat. He is not the Bali Brahmabhat, it is Banbhat. In this Kadambari there are the 64 kalas are there. The kalas are related
with the arts, commerce, science, skill, sports and multidisciplinary. These are the 64 kalas are there. Kalas means what? That is additional qualities, you can say that. Somebody can say that a good poem will not be sing. He can write but he will not sing or song. He can write but he is not able to act. He can write. I can say that okay, you can implement the NEP, all that are important for the purpose of college administration or everywhere, that I can say that. But it is difficult to implement at the ground level. Okay, it is up to stage or the dais, it is over. सब छान छान करने के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या डिफिकल्ट है सबको मालूम है, वो क्या रहता है वो सबको मालूम है, वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो है मैंने जो डायग्राम दिखा है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, उसमें आर्ट्स भी आता है, कॉमर्स भी आता है, साइंस भी आता है, स्किल भी आता है, स्पोर्ट्स भी। तो ये कहाँ से लिया? ये जो कस्तूरी रंगन साहब ने 2014 में पढ़ा, उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन किया, तो वहाँ पर उसका ओरिजिन जो था इसमें यहाँ से वो चालू हो गया। तो इसमें क्या दिया है 64 क्लास में हर एक आदमी को वहाँ पर, अभी उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा, तो उसमें एक साइंस है, कोर साइंस और सॉफ्ट साइंस। सॉफ्ट साइंस यानी क्या है? सॉफ्ट साइंस यानी सोशल साइंस। उसमें बोलते हैं सोशल है ना, फिर बाद में साइंस है ना, तो सॉफ्ट साइंस। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स ये जो है वो कोर साइंस है। सॉफ्ट साइंस क्या है? ये तुम्हारा जो मदर लैंग्वेज है, तुम्हारा इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, सब सॉफ्ट साइंस है। वो सोशल साइंस बोलते हम बोल सकते हैं। और कॉमर्स में, और कॉमर्स के लोग बोलते हैं सर कॉमर्स के, तो हम कॉमर्स में सोशल साइंस में नहीं आते हैं। हमारा पिंड ही अलग है, हम बाजू में रहते हैं। वो बोलते हैं क्यों बाजू में रहते हैं? बोला तुम हमको पूछते नहीं क्या नहीं कैसे क्या हम अंदर आ सकते? तो बोला हमारा स्किल क्या है? वो बोलते हैं हमारा स्किल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। उसका उच्चारण ई से चालू है, स्पेलिंग ई से चालू लगता है, लेकिन कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मैं बोला ई क्यों नहीं बोला, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं बोला? तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है, बोले एंटर बोले तो उधर अंदर आ जाओ, इसलिए नहीं आते बोले, उसलिए एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। उनका स्किल वहाँ पर है। जब तक ये हम कहेंगे, हम स्टूडेंट को जब पढ़ाते हैं, हम आर्ट्स कॉमर्स साइंस हमारे कॉलेज में है, हम बच्चों को पूछते हैं क्या फ़र्क है आर्ट्स कॉमर्स साइंस में। हम बोलते हैं साइंस जो है आपको रोजगार दे सकती है, साइंस जो है आपको रोजगार दे सकती है। आर्ट्स जो है मिला हुआ रोजगार कैसे सस्टेन करना है, बचा के रखना है, ये आर्ट्स बोल सकता है। कॉमर्स क्या सकता है, वो सस्टेन करने के लिए क्या तगादा करना पड़ता है, क्या ड्रामा करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, उसका डेवलपमेंट कैसा करना पड़ता है, ये कॉमर्स में पढ़ाता है। ये तीनों में का फर्क ही है। अभी वो निकाल के अभी 64 क्लास में आ गया, तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्किल एंड स्पोर्ट्स एडिशनल टू स्किल और स्पोर्ट्स में क्या है, ये हम जब इसका असेसमेंट कब होगा? इसका असेसमेंट 2013 में होगा, 30 क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन 2023 में होगा। उसका आउटकम कब सोचेंगे? तो 2030 में सोचेंगे। जब वो आएगा उस टाइम में कुछ मिला तो उस टाइम में वो देखेंगे, वो ठीक है कंटिन्यू करेंगे, नहीं हुआ तो फिर 1986 में फिर आ जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट का प्लान। तो here that is a background and objective of NEP. Focus on value-based education programs. How it has came. There is a truth, dharma, then peace, love, and ahimsa. You may aware all these are related with the religion of Govt, that group. You can find this. And how you will have, there is a intellectual, physical, emotional, psychological, and spiritual. All that are concerned with this NEP. Then this is, you can say that focus on value-based education program, these are concerned. Then focus on objective. So whenever you are going to focus on the objective, there is a education, knowledge, skill, balance, vision and identity. अत दीप भव, आइडेंटिटी का मतलब क्या है? अत दीप भव मतलब क्या है? तुम खुद ही खुद का सर्च कर सकते हो, जान सकते हो। तो ये आइडेंटिटी वहाँ पर है।
वो कहाँ पर है, वो NEP का फोकस में ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें रोल ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी का क्या है? तो यहाँ पर रोल ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नॉलेज क्रिएशन, knowledge dissemination and knowledge application. We have the knowledge, best very knowledge that Farid Zakaria has told. You have the ability to do the hard work, but you are not thinking. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। तो हम बहुत बार बोलते हैं हार्ड वर्क करके आउटकम आएगा, तो डॉगी भी हार्ड वर्क करता ही है, 24 आवर्स भी वो काम करता है, तो वर्क आउटकम क्यों नहीं? तो वहाँ पर ऐसा विश्लेषण है, हार्ड वर्क करो ही, उसके साथ उसका फीलिंग्स आना चाहिए। और अगर फीलिंग्स नहीं आएगा तो हार्ड वर्क का कुछ मतलब नहीं रहेगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यू डू द हार्ड वर्क विद द फीलिंग्स, एंड इन द केस ऑफ फीलिंग्स द थिंकिंग हैज के you are ready to do the hard work. Along with hard work, you have the ability to make the feelings. That is more important. Only say that is a hard work, it is not sufficient. The hard work with feeling, it is more sufficient. So we have the knowledge creation, we have the ability to do knowledge creation, dissemination is there, and knowledge application is there. Now that is interlinked with what? Knowledge application leads into productivity, beneficial interests and activities. That it could be accelerate both economic, which are particularly related, that is hidden here, but that is related with the job, and you can say that is about the economics to sustain in the good manner. That is hidden here. But that is a knowledge application leads into productivity, beneficial interests and activities. Right now I told you. You may say that is a Google, it is one of the teacher is there. What is the difference in between teacher of ourselves and Google teacher? What is the difference? From the Google, you can have the information. From the human teacher, you only have the knowledge. And one of the important thing is there, the information may be fake one, maybe, not 100% fake one. The information, it may be false one, but the knowledge never be false one. It can sustain to you. So you have to rely, you have to trust only on the teacher in spite of Google. You can have the information, but you have to sustain for sustaining. The teachers are more important. Therefore, institutes, organization, physical teachers are more important. Then, while we need for a skilled workforce, particularly involving mathematics, that core science subjects are there increasingly in greater demand. Education must move towards less content. मतलब अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा कंटेंट है, वो कम कंटेंट में बोलना चाहिए, तो यही वहाँ पर बोल रहा हूँ. तो एजुकेशन मस्ट मूव टुवर्ड्स लेस कंटेंट एंड मोर टुवर्ड्स लर्निंग अबाउट हाउ टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू क्रिएटिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एंड हाउ टू इनोवेट, adapt and absorb new material in knowledge and changing fields. Pedagogy must evolve to make education more experiential, means what? Anubhav le. Experiential, it is a experience you can understand, holistic, integrated, inquiry driven, discovery oriented, learner oriented, discussion based, flexible, and of course enjoyable. World class institutions of ancient India such as Takshashila, Nalanda, etc. set the highest standards of multidisciplinary teaching and research and hosted scholars and students from across backgrounds and countries. Earlier I told you, before independence and after independence only one Nobel laureate is there in the science. That is nothing but the C.V. Raman. But right now there are the n number of IITs, n number of IIMs, IIM or CAT, CIDA, such kind of the institutes are came into the nation. But there is not a single Nobel laureate is there. One of the things you may aware, the topmost university in the world, it is referred as a MIT, Massachusetts Institute of Technology. It is located in the America. Why it is a topmost? And second one, it is a Stanford. You may aware, after IIT Kharagpur, Sundar Pichai shifted to the Stanford. He had MTech from the Stanford.
But more than that is a Stanford. MIT, it is a premier institute in the world. Why it is? I want to say one of the important things. In India, after independence and before independence, only one Nobel laureate is there in the physics. In Department of Physics of the MIT, Massachusetts Institute of Technology, it is established in 1967. Still then, still today, there are 27 Nobel laureates are there only from the physics department of MIT Institute. You have to find what is the outcome, what is the achievement. So, aware about it. So, earlier I told you, whatever in the research you are ready to do, that more big, that is useful to the society, that is useful to the people, that is useful to your student, that you have to apply. From above approach, the fundamental principles that guide both the education system and the individual institutions. Recognizing, identifying, fostering the unique capabilities of each student by sensitizing teachers and parents to promote each student's holistic development in both the academic and non-academic spheres. Flexibility so that learners have the ability to choose their learning objectives and programs and thereby choose their own path in life according to their talents and interests. That there is something it is hidden, but apart from that, multidisciplinary and holistic education across the sciences, social sciences, arts, humanities, and sports for a multidisciplinary world in order to ensure the unity and integrity of all knowledge. Emphasis on conceptual understanding rather than the rote learning and learning for exams. Creativity, critical thinking to encourage logical decision making and innovation. It is essential. Silent feature for 4-year multidisciplinary UG program. That is most important. What is that? There is the 4 subjects are there. You can say that there is a major, minor, skill based and elective. Here I have shown that is a monograph of your college. Why such kind of the example I have taken? I want to keep in front of you. The answer it is that in the NEP criteria, there is I have mentioned, there is e-governance is there. In the case of e-governance, criteria number 6, there is the e-learning resources are there. Why I have taken this here? Because when the students are coming to have the admission, they went to website of our college, your college. And when you find the website, automatically the NEP office knows it, they have. Suppose my lecture somebody has observed in the NEP office. There is no need to explain much more about it to the NEP office. They identified it. They observe here. There is already e-governance is there. And here I have shown particularly there is admission process is there. That admission process indicates that you are using the software. It is more feasible to have the admission in the easy access for the student. There is an admission I have taken. So what is it? In the that I have mentioned there is a 4-year multidisciplinary UG program is there. There is a silent features are there. Semester move, it is essential. AT, you can say that is a AT square. What is ATE? ATE means anytime enter. Another AT, it is a anytime exit. You can enter anytime, you can exit anytime. But how much time it is allowed? If suppose there are the 4 years are there, student after 2 months you want to leave it, that is not allowed. How much time you can enter? You can enter only 2 times. Into the total 4-year program. That is more important. That is only 2 times you can enter, you can exit. Then the second one, that is the CBCS, choice based credit system. If suppose you have completed 1 year, you can have the certificate degree. If you have completed 2 years, you can have that is a diploma. If you have completed 3 years, that is you can say that BBD, basic bachelor degree. Then 4 years, MBD, that is a honors. M stands for multidisciplinary bachelor degree. 4-year degree, it is a multidisciplinary bachelor degree, and you can say that it is a honors. Then next what you can,
if you are going to have, that is a 3 basic bachelor degree, and you have completed 2 semester master degree. Sorry, it is not essential. I have a capacity to hard work as well as feelings. But the criteria of feeling you are going to fulfill. So thank you all of you. Sir, because I am just you can say that I am a teacher of very shy. How can how that is a problem. I wear a very white color shirt, and if suppose it falls, it becomes difficult to me. And it is not difficult only to me. You may aware, it will become more difficult to my wife to make a white, isn't it? And I am making the feeling. What will be the feeling when she taken my shirt to wash at that time? So, okay, just consider it as a fun. So, what is important thing? If you are having 3-year basic bachelor degree, if you have completed 2 semester master degree with research project, you can admitted for the PhD. That is important. There is right now in master degree there are the 4 semesters are there. In the NEP they have mentioned that is a 2 semester master degree with the research project. That is our additional thing. With the research project you can have the admission for the PhD. And if you are going to have, that is a 4-year master multidisciplinary bachelor degree with the honors, if you are having a suitable grade means you may have it, there is a A grade, B grade, O grade is there. If you are going to have, that is a suitable grade. With research component, in the case of research component, you can have or you can allow some project to the student. There are the 5-6 month programs are there, 1 year program is there, just complete a degree, one research component. That student, that will become more visible to have the admission for the PhD. It is very eligible, you can have, you have to complete. That is the important thing. Now after that, we are concerned with what is the outcomes. Everywhere the outcome it is important. From the beginning, the outcome it is important. In 1948, what is the outcome of National Education Policy of 1948? All the CSR laboratory, all kinds of the organizations, it is established due to the policy of 1948. 1986 policy, you may aware, I have mentioned, all administrative officers has been created by the 1986 policy. Now we are entering into 23. What will be happen? We will check it into the 2030. At that time we will check. Now, but apart from that, it is at least we have to discuss what will be the outcome. So, these are the outcomes that I have taken in the circle, in the sphere. There are the n number of things. You can read it, you can have. Due to the time concern, I don't want to make the repetition. Already I have made number of things, but one thing I want to specifically read it. Finally, that point I have written, finally, last one. A part of holistic education, students at all HEI, higher education institutes, will be provided with the opportunities for internship with local industries. Local industries are more important. That is also in the NEP. Businesses, artists, crafts, persons, etc., as well as research themselves. Then themselves in case of internship, there is an internship is there with faculty and researchers at their own or other HEI research institutes, so that students may actively engage with the practical side of their learning and as a byproduct further improve their employment. That is the outcome, that is the expected outcome. Here I have not written that is the outcome, but it is the expected outcomes. It is the expected outcomes. These points are there that are particularly concerned with the multidisciplinary approaches. So there is a additional to do the HEI. Additional points are there. What to do? An academic bank of credit, ABC, that I have seen right now outside of the college. There is the ABC program is there. Academic bank of credit, because there is a CBCS pattern is there to secure the credit. If one student have admitted and he has the credit, to make safe, bank it is a bank. We only know that is a bank of money. It keep our money safe. It is considered either that is correct or wrong one, that is don't do, because there are n number of bank corrupts are there, number of processes are there.
where our money is going, that is not our discussion point. But there is a ABC is there, established digital store. The academic credits earned from various recognized HI so that the degrees from all HI can be awarded taking into account credits earned. HI will focus on research and innovation by setting up startup, incubation centers, technology development centers in front of all these points that we can do. Given the scenario of epidemics and pandemics, why this is the scenario of pandemics has came? Because in 2020 we face a tremendous problem. One of the things I observed, or everybody said that, what is where the maximum setback of the corona you can find? The maximum setback of the corona is has observed into the higher education, particularly in higher education. Maximum setback. How it is? Because the student went everything on the online. Everything on the online. And because of online, there are number of practices have been done. And because of practices, what happens, whatever the student right now are learning, they are very poor in their subjects. This is observed throughout India, not particularly in university or my university, throughout India. All the educationalists mention that is the most important setback, or most setback has not important, has came for the higher education at all kinds of educations are there. And because of that, if the epidemic and pandemic situation has came at that time, how you can survive, how you can make the mechanism, that is important. Last one, Research and Development Cell, RDC, Research Advisory Council, RAC, should be constituted. That in the case of RAC, there is a 5 criteria are there, just like the NEP. There are the 7 criteria are there. In the RAC, there are the 5 criteria are there. Each criteria have the different chairman and the members are there. You can find on the guidelines. The guidelines it is issued by the HR Ministry or UGC in 18th January 2022. That is related with the 18th January 2022. That is related with the Research Advisory Council. You have to establish for the preparedness of NEP or the NEP. You have to establish this Research Advisory Council. That is most important. So this is about the entire thing. Then I have given the highlights. What is the expected things are there. In 1986, in 2022, what is expected promotion of IT skill-based education and research are there. These are some points I have given. There is no time to read all that things, so I want to skip it. These are the 14 points are there that I have summarized that about the 1986 National Education Policy and this Education Policy. Acknowledgement is more important everywhere. Principal of K. Kandekar and IPC coordinator of GDPG College, Government Digvijay PG College. Is it right? Rajnandgaon, Chhattisgarh. In my close there is a Rajnandgaon, MIDC. Most of the time I said my family, I am going to Rajnandgaon. They asked to me, if you are going to Rajnandgaon, why you are making such kind of a preparation? It is just 10 kilometers from us. Then I learned that it is not a Rajnandgaon, it is a Rajnandgaon. Okay, that is Chhattisgarh. Then Dr. R.K. Ahe, principal and IPSC coordinator. I have mentioned particularly IPSC everywhere. IPSC is important. Functional IPSC is important everywhere. New Arts College, Science College, Parne. And most importantly, organizer of national workshop for NEP, this college. And this is my college. It is just a small part. It is an administrative building of our college. Recently we had 3.54 CGPA of A++ college. I want to say one important thing, incremental growth you can find in my college. In 2002 we have the B grade. In 2012 we have the B++ grade. And 2017 we have the A grade. And in 2023 we have the A++. Incremental growth. And you may aware, incremental growth, it is always sustainable growth. There is no chance to go behind. If there is, our management has that is 10 colleges. Our management, Ahmednagar Jilla Maratha Vidya Prasarana Samaj. Ahmednagar Jilla Maratha Vidya
It is an educational organization. It has 10 colleges. Out of 10 colleges, 8 colleges have the A grade. Only 2 colleges have the B double plus. And out of that, recently we accredited, our management has accredited 4 colleges. All 4 colleges, among that 2 colleges have that is A grade and 2 colleges have A double plus grade. Among that this is one. That is a 3.54. And the scenario has came after the discrimination of the NEP office, after the resignation of that Bhushan Patwardhan, who is the director of NEP. There are the n number of problems have been created. What will happen? How the team will come? You may aware. Entire accreditation depends upon the nature of team. Nowadays, whatever the team has come in, they are very strict. Very strict. Each and every point they are observing. If you want to ask something regarding that is NEP, I will deliver it. And thank you all of you. One of the things is there. Here I have written. If something like keep it with you in the memories, dislike, left it in this hall, and if some there are objective, some doubts are there, if you like or dislike, don't keep with you, just call me in this mobile and email me in this email ID. Thank you all of you. I know there is a very hot situation is there outside the marriage. You will find the temperature is more than 40 or 45. In this condition it is not simple to survive. I feel very proud. You calmly listen to me. Like or dislike that will come up. You listen very calmly to me and you find me very hard because you may aware I am a teacher of chemistry. Chemistry people are very hard. They are never be think in the smooth way. They are always making the argument. No, it is not like that. It is not like that. I am from that class. I am very hard, but I feel very nice your college. I want to view the feedback. If you have the feedback, I will keep the feedback on your website. You can use it. Thank you all of you, and you have given the opportunity to me here. And by your prior permission, Thank you so much, sir, for your nice and kind words. And really, it was a very insightful, wonderful, informative. What the words I may use, I can. Thank you so much once again. Now, moving on our next session, that is question answer. I invite participants to ask any question or query if they have, in online and offline both. I request Dean sir, as Principal sir has told me, please sir, very humbly I invite you on the dais. Online participants, इसके साथ I invite. लोग सोचेंगे क्या कर रहे थे सर? Is there any query, question you may ask sir, Diggy sir? Diggy card sir, sorry. Diggy card. वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे इसका मतलब ये हुआ कि Sir, सब समझ में आया। online participants there क्योंकि are मेरा also. लेक्चर ही उतना अच्छा तो वो समझ No गए। sir, online participants are also there. हाँ, मेरा आपसे प्रश्न है, जैसे आपका कॉलेज ए डबल प्लस है, आपने हमारे सब चीज को देखा, कुछ तो ऐसी बात होगी, ऐसा कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जहां पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? इस पे मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जरूर बताएं
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कॉलेज में कोई कमी नहीं है, सारी चीजें हैं। लेकिन क्या होता है कि मार्क्स कैसे स्कोर करना है, नेक में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मार्क्स कैसे स्कोर करना है। तो मार्क्स कैसे स्कोर करें, ये थोड़ा सा इसके बारे में चाहता हूँ। एवरीवेयर द NAC accreditation is more important. सब कॉलेज में NAC का बहुत बड़ा, हमारे मराठी में बोलता है जत्रा और यात्रा, सब तरह रहता है। सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हमको। मैं सबको अभी आ गया हूँ, हमारा और आपका कॉलेज MOU में है, तो सब कुछ मैं बोल दूँगा 10 मिनट 5 मिनट का टाइम दूँगा। हमारे कॉलेज में NAC की जो टीम थी, उसके पहले उसका प्रिपेयरनेस में कितने हमने काम किया। हमारे कॉलेज का जो टोटल SSR है, तो देखेंगे वेबसाइट पे जाके, उस कम से कम 20,000 का SSR पेज का, 20,000 पेज का SSR, 20,000 पेज का SSR है हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। उसके बाद SSR सबमिट करने के बाद पहला उनका आता है DVV, डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडिटी, जो वेरीफाई करके उसको वैलिडिटी करते हैं। तो कोई लोग बोलते हैं डेटा वैलिडिटी एंड वेरिफिकेशन, वैसा नहीं है, डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडिटी वो आता है। तो क्राइटेरिया वाइज उनका पॉइंट आते हैं, उसमें ज़्यादातर 2 नंबर क्राइटेरिया में ज़्यादा पॉइंट आते हैं। 1 नंबर में 1 या 2 आता है, लेकिन 2 नंबर क्राइटेरिया 350 मार्क्स का जो है उसमें ज़्यादा क्वेरीज आते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। 3 नंबर भी मार्क्स के वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो 3 नंबर का क्राइटेरिया है रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन है, वहाँ पर हर एक कॉलेज का रिसर्च की एक्टिविटी बहुत कम रहती है। अभी मैंने NEP में बोला, तुम्हारे तो UGC केयर लिस्ट में पेपर पब्लिश करना इतना सफिशिएंट नहीं है। वो NAC क्या समझती है कि NAC बोलता है कि तुमने किया डॉक्यूमेंटेशन के लिए ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज करने के लिए ठीक है, लेकिन वो उतना उसको वेटेज नहीं, ऐसा NAC के जो ऑफिस वाले बियरर है वो बोलते हैं। तो वो बोलते हैं UGC केयर लिस्ट इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू पब्लिश योर वर्क इन वेरी रेप्यूटेड जर्नल्स। सपोज आई एम फ्रॉम द केमिस्ट्री, यू हैव टू पब्लिश योर रिसर्च वर्क इन द ACS, American Chemical Society, in the RSC, Royal Society of Chemistry, elsewhere, then Springer and Taylor and Francis, such kind of the publications they require. ये जो पेपर है, ये सब पेपर स्कोपस इंडेक्स में आते हैं, स्कोपस इंडेक्स में आते हैं। मेरा हिंदी थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, तो वो स्कोपस इंडेक्स के लिए ट्राई करना। और दूसरा भी जो इश्यू रहता है हमेशा, सोशल साइंस वाले क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, लेकिन उनका एक अपेक्षित, उनको एक्सपेक्टेड ऐसा है, जो कि ना इकोनॉमिक्स का आदमी है, जो तुम्हारा बजट आता है, बजट के बाद जो प्रोफेसर रहते हैं, उनका जो आर्टिकल है उसके ऊपर एसेस किया, वो देश का सबसे 4-5 जो न्यूज़पेपर है, इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, और महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र टाइम्स, लोक सत्ता, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर है, वो बड़े न्यूज़पेपर में उनका विश्लेषण वो पेपर में आना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। और वो मराठी ये जो विषय वाले उनके बारे में क्या करते हैं कि साहित्य सम्मेलन रहता है, लेकिन नागपुर में कई साल हो गए, वो साहित्य सम्मेलन में तुम्हारे टीचर ने क्या क्या एक्टिवेट किया वो दिखा, मराठी वाले को पूछते हैं। वो ज़्यादातर क्या लोग बाहर कौन से पढ़ते हैं, वो सोशल साइंस वाले बोलते हैं हम क्या करेंगे, करके क्या करेंगे, ज्योग्राफी वाले बोलते हैं हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी कर क्या। वो हमारे हेड को पूछा, एक जाता टाइम में उन्होंने पूछा विच इज़ द बेटर प्लेस ज्योग्राफिकली इन इंडिया फॉर यू। ये सिंपल क्वेश्चन हमारे हेड को उन्होंने पूछा। या ऑनलाइन बंद हो गया था सर, अच्छा ऑनलाइन ये अपना NEP के बजाय चल रहा है। वो हमारे वहाँ की देखेंगे तो फिर मेरे जाने के बाद वो आने नहीं देंगे। तो उधर जाके तुमने ऐसा बोल दिया हमारा। तो उन्होंने पूछा है कि ज्योग्राफिकली विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू यू, जस्ट टेल। तो ज्योग्राफी का आदमी तो क्या बोलेंगे, बेस्ट प्लेस बोले तो हमारा कॉलेज बोलेंगे,
क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो उसका आंसर ऐसा था, उनका घर खुद का ये सबसे बेस्ट प्लेस रहता, उनका एक्सपेक्टेशन वो था। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं। मैं अभी एक बात बोलना चाहता हूँ केमिस्ट्री IPSC कोऑर्डिनेटर के बारे में। हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल IPSC कोऑर्डिनेटर और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड वो प्रोफेसर दिलीप दुबे है। तो देखो कैसा डायलामा रहता है। उस दिन वो 9 बजे कॉलेज में आ गए, 9:30 बजे कॉलेज में मीटिंग प्रिंसिपल के साथ हो गए, वो 11:30 बजे तक चला। उस दिन पहला लेक्चर MSc का फर्स्ट ईयर का वो टाइम टेबल में देख के आया था। किसका लेक्चर? कौन? NEP के चेयरमैन। कौन देखा था? NEP के चेयरमैन। तो 9:30 11:30 बजे तक चला। उसके बाद डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन आ गया। उस टाइम में IPSC कोऑर्डिनेटर को पूछा उन्होंने, यू आर वाइस प्रिंसिपल, यू आर IPSC कोऑर्डिनेटर, डू यू कंडक्टेड द लेक्चर? तो वो लेते थे। सर बोले हाँ मैं लेता हूँ, हमेशा लेता हूँ। तो उन्होंने वो स्पेसिफिकली पूछा, आज MSc फर्स्ट ईयर में क्या लिया? वो ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में, सर को मालूम है। वो पढ़ाते, उस दिन भी पढ़ाए थे, उस दिन भी लेक्चर कंडक्ट किए थे, लेक्चर लेके उधर आए थे IPSC कोऑर्डिनेटर। तो वहाँ पर बोल दिए उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने आगे जाके उनके रिसर्च के बारे में पूछा। और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहता है केमिस्ट्री में, उसके बाद उन्होंने पूछा कि फिजिकल केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है? तो बोला मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं फिजिकल केमिस्ट्री मैं ही। मेरा आवाज़ बहुत बड़ा है, आवाज़ आ रही है आपको? वी आर वेरी हार्ड वर्कर। तो उन्होंने पूछा कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आप? तो उन्होंने पूछा फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स सेक्शन है, तो थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल क्या है? मैं और अगर टीचर भी रहा तो भी एक्सीडेंटली पूछ लिया, हमारे प्रिपरेशन में नहीं था ऐसा क्वेश्चन आएगा वो। तो हम टीचिंग है 25 years, आई हैव प्रमोटेड 15 years back professor, that is true, and I told directly that is the principle, he accepted it. That is not accepted. They again raise the question. The thermodynamics you are studying, you are teaching in the physics as well as in physical chemistry. Physics and chemistry both are different. What is the difference? Then I told him, whatever the answer is there, I have told. Then he entered next. I have avoided that is a UGC research award. He observed it. He asked the question to me, how you get it? Then I have detailed, I have given the process. I went into the Delhi UGC office, then I have made the interface meeting, then they have selected me, then they have asked the question, they became satisfied. After that, he entered, for on which topic your PhD students are working right now. तो मेरे 2 PhD स्टूडेंट होके गए तो कौन से टॉपिक में काम करते हैं ऐसे पूछा। तो मैंने उनको बोल दिया ग्राफीन हो गया, कंडक्टिंग पॉलीमर, तो वो साफ ग्राफीन के ही थे। वो जो हमारे चेयरमैन थे होशियार धामी बोल के, सूरजमल यूनिवर्सिटी नैनीताल, वो स्पेशलाइजेशन फिजिक्स के पढ़ाते मैथमेटिक्स से, और पेटेंट है केमिस्ट्री में 7 पेटेंट, और उनका टोटल एक्सपीरियंस है एजुकेशन में 45 years, और उसमें से कम 25 साल वो एकेडमिक में एडमिनिस्ट्रेटिव में रहे। तुम गूगल करके देख लो, 7 पेटेंट है उनके केमिस्ट्री में, पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, स्पेशलाइजेशन फिजिक्स, और वो उतना ही नहीं, उन्होंने संस्कृत का बहुत ज्ञान था। हमारे जो हिंदी के सहयोगी थे उनको उन्होंने क्वेश्चन पूछा, सहायक वो ये को ये लगाते हैं आप, सहायक वो ये क्यों डबल क्यों किया, तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है वो उन्होंने पूछा। फिर उसके बाद सुस्वागतम लिखते हैं, वो अपने कोई भी गेस्ट आ गए तो हम लिखते हैं ना सुस्वागतम, वो सुस्वागतम क्यों लिखा वो सर को ही पूछो। वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अभी एक इंसिडेंट मैं बोलता हूँ, वो जो सर को पूछा था, जब वो राउंड लेते समय वो MSc फर्स्ट ईयर के क्लास में गए, जब क्लास में गए तो स्टूडेंट के नोटबुक देखा, सर ने बोला था उनके प्रेजेंटेशन में मैं लेक्चर ले लिया, वो पॉइंट बोला था, तो उन्होंने क्रॉस चेकिंग किया वहाँ पर वो स्टूडेंट के नोटबुक में। अब एक बात बोलता हूँ, मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा था, TY BSc मैथमेटिक्स का, वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने
के बाद कोऑर्डिनेटर बैठ गए, उनके साथ वो बैठ गए और वो डिपार्टमेंट के हेड थे वो भी बैठ गए और कंसल्ट टीचर भी बैठ गए और उन्होंने 10 मिनट में एक प्रॉब्लम सोल्यूशन किया। प्रॉब्लम सोल्यूशन करने के बाद सबको पूछा, हमने बराबर किया ना, करेक्ट है ना? हर एक बोल रहा है हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। क्यों आप कौन अपोज करेगा चेयरमैन को? नहीं ये गलत है, कौन बोलेगा? लेकिन हमारा गुड लक ऐसा था, हमारे स्टाफ में एक यूपीएससी क्रैक करके आई हुई अभी स्टाफ, उन्होंने डेयरिंग करके नूतन नाम है उसका, मांडा सरनेम है, उन्होंने बोल दिया सर ये गलत है, डेयरिंग करके। तो उन्होंने पूछा क्या गलत है, तो उन्होंने बोला सर ये स्टेप गलत है। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनको स्टेज पर बुलाए, वो खुद को उनको अप्रिशिएट किया और वो हमारे प्रिंसिपल साहब को बोले ये नॉन ग्रैंड में अभी अगले साल वो ग्रैंड पे आना चाहिए, ही विल बिकेम अ वेरी गुड टीचर इन फ्यूचर। उसका उनका अप्रिसिएशन था। और उसके बाद कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलता हूँ, वो जर्नल जो रिसर्च है तो स्कोपस इंडेक्स में आना ही चाहिए, वो पूछते ही स्कोपस इंडेक्स में ट्राई करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा बेस्ट प्रैक्टिसेस, देयर आर द टू ऑलवेज कंफ्यूजन इज देयर, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अलग है। आप दिखाए खाली दो या तीन दिखाओ या कम से कम एक दिखाओ, ज़्यादा मत दिखाओ। बाकी का जो प्रैक्टिस है इनोवेटिव बोल के बोलो, बेस्ट प्रैक्टिसेस और इनोवेटिव प्रैक्टिस में कंफ्यूज हो। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है वो तुम्हारे गांव कहाँ पर है उसके ऊपर पूछते रहते हैं। हमारा थोड़ा गांव राय भाग में था, उन्होंने पूछा आज से 20 साल के बाद तुम्हारे गांव में पानी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो तुम उसके लिए क्या प्लानिंग किया? 20 साल के बाद हम बोलते वी आर सफरिंग फ्रॉम अ ड्रॉप फ्रॉम एरिया, अवर तालुका इट इज फ्रॉम द ड्रॉप फ्रॉम। तो उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया कि 20 साल के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा तो आप क्या करें? पानी नहीं रहेगा, कुछ प्लानिंग है? ऐसा उन्होंने पूछा। तो आपको इतना ही कहना है, आप फोकस करो रिसर्च के ऊपर और बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर। बाकी का वो ट्राई हो जाएगा, वो साथ देख लेंगे, क्या उत्तर देना उनको मालूम है वो कर लेंगे। लेकिन दो ही चीज़ों के ऊपर फोकस करो, एक रिसर्च और दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस। इसके ऊपर ही हमारे अभी लास्ट ईयर में 4 एक्रेडिटेशन हो गया, 4 कॉलेजेस में। सब कॉलेजेस में यही क्वेश्चन पूछते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस और तुम्हारा स्कोपस इंडेक्स जर्नल। एक भी रहने दो, एक वो दिखा, लेकिन वो स्कोपस का नहीं। हम क्या करते हैं, हम यूजीसी के हमारे इतना पेपर है ये वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनको मालूम रहता है, वो सब पढ़ के आए होते हैं, जैसे साथ में दिया होता है, सब पढ़ के आते हैं, वो उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तुम्हारे पास क्या नहीं है उसके ऊपर वो फोकस करते। मैं अभी हमारे साथी फर्गूसन कॉलेज पुणे में, बहुत बड़ा कॉलेज है, आपको मालूम होगा, बहुत ओल्ड कॉलेज है, उसका लास्ट मैथ में वो एटोनमस कॉलेज है 3.61 था, अभी उसका आ गया 3.31। एक कम क्यों हुआ? मैं सबको भी सुबह बोला कि वहाँ पर उन्होंने एसएसआर में रेमेडियल कोचिंग क्लासेस पे बोला था, फोकस किया, तो चेयरमैन ने पूछ लिया, वो अटेंडेंस दिखा, खाली अटेंडेंस पे पीपी करना वो भी नहीं एक्सेप्ट करते, उसके ऊपर स्टूडेंट का साइन होना चाहिए। तो ये 2-4 पॉइंट है, उसके ऊपर फोकस करो, इतना ही करो। ये बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या इसको उनका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये होता ही है कि सब कॉलेजेस में। और अगर आपके कॉलेज में पानी रहना ये न्याय बोलेगा तब करेंगे क्या? आपके पास रहता ही है ना पानी का, यूरिनल है, अच्छा सा यूरिनल है, ये न्याय बोलता है बोल के करते हैं क्या? नहीं, आपके पास रहता ही है। अच्छी लाइब्रेरी होना चाहिए, वो तो आपके पास रहता ही है। उनके वो काउंट के ऊपर, वो एस्पेक्ट के ऊपर कभी भी सोचते नहीं, खाली वो सोचते आपका रिसर्च क्या है और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और उसके बाद आउटकम क्या है, आपका आउटकम्स क्या है। और तुम बोलेंगे हम हमारा ये अवार्ड है वो, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो इंस्टीट्यूशनल अवार्ड के ऊपर फोकस करते, इंडिविजुअल अवार्ड के ऊपर फोकस नहीं करते, इंस्टीट्यूशनल अवार्ड के ऊपर फोकस करते। मैं अभी बोला था कि गवर्नेंस लीडरशिप मैनेजमेंट में क्या क्या देखते हैं, तुम्हारा बजट, पर ईयर का बजट, और जो उसमें विजन मिशन दिया है उसके साथ उसके हिसाब से हम आप काम कर रहे हैं क्या नहीं, वो देखते हैं। मैंने अभी प्रेजेंटेशन में आपको बोला, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव देख लिया, वो जब आते हैं वहाँ पर विजन मिशन वो पढ़ के आते हैं। मैंने भी आपका विजन मिशन देखा है, तो उसमें NEP ऑब्जेक्टिव का क्यों लिया? क्योंकि आपको भी वो
ऑब्वियसली मालूम है, फिर भी कम से कम मालूम होना। उसके बाद लास्ट में मैंने सर का वो एडमिशन का प्रोसेस दिखा। ये क्या दिखाता है कि तुम्हारे पास ई गवर्नेंस अच्छे से चल रहा है। वो आप स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? एडमिशन लेने के लिए सपोर्ट करते हैं। उनको आपके कॉलेज में आने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से वो ऑनलाइन भर देते, वो हार्ड कॉपी आपके बाद सबमिट करते, वो काम खत्म हो जाता है। ये सपोर्ट है। अभी उसमें 6th क्राइटेरिया में या 5th क्राइटेरिया में, सॉरी हाँ 5th क्राइटेरिया में स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। उसमें स्टूडेंट सपोर्ट में हर कोई IPS कोऑर्डिनेटर हो, साहब हो, बड़े साहब हो, सब कंफ्यूजन है लेकिन क्या करना है, स्टूडेंट सपोर्ट में क्या करना है। मैं अभी लास्ट मंथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में गया था, ऐसे ही NEP पर लेक्चर लेने के लिए। मैं वहाँ पर पूछा, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू अभी नया है, 2009 का है, लेकिन वर्केबल 2019 में हो गया। NEP का प्रोग्राम था, वहाँ पर मैं गया था। मैं उनको पूछा कि स्टूडेंट सपोर्ट क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? तो उन्होंने मेरे को दिखाया कि वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी ने खुद के बसेस लिए स्टूडेंट के लिए आने जाने के लिए। जम्मू और वो जो यूनिवर्सिटी है, थोड़ा यूनिवर्सिटी दूर है, वो उधर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ रोड पे है, उधर थोड़ा दूर है, अंदर है। तो स्टूडेंट आने के जाने के लिए उनको बसेस उन्होंने अलाउड किया है, फ्री बसेस। और उनको वहाँ पर हॉस्टल नहीं है अभी, तो हॉस्टल नहीं है बोल के वो स्टूडेंट को वहाँ गाँव में जम्मू में हॉस्टल रेंट पे लेके वहाँ पर बच्चे रखते। ये उन्होंने हाईलाइट किया, बोला ये स्टूडेंट सपोर्ट है। प्रोग्रेशन वो कॉलेज का भाग नहीं, प्रोग्रेशन कॉलेज का भाग नहीं। तुम्हें BSc किया, BA किया, BCom किया, उसके बाद वो MA MCom जाता है या छोड़ के जाता है। और अगर छोड़ गया तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलो, वो जॉब में है, प्लेसमेंट हो गया। और अगर PG में गया तो वो प्रोग्रेशन में बोलो, इतना ही बोल दो, उसमें क्या फर्क है। और अगर इतना ही मेरे को आपको बोलना है, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे को मालूम है उतना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सब ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आ सकते हैं। MOU इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? MOU किनके बीच को ज़्यादा? हाँ, MOU में है ना, वो MOU में बोलते हैं फंक्शनल MOU। बहुत सारे लोग बहुत सारे MOU करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, लेकिन वो ईडर हो जाते हैं। ईडर यानी काम के नहीं, काम ही नहीं करते, खाली MOU वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, वो उनको मालूम नहीं है कि उनको मालूम है क्या क्या। अभी समझो मैं MOU आपके पास आया हूँ या अभी तुम्हें फोटोग्राफ वगैरह दिखाएंगे, कुछ रिपोर्ट लिखेंगे, तो मैं फिजिकली आ गया हूँ, तो टीचर शिफ्टिंग ट्रांसपोर्ट, इधर के बच्चे उधर आ जाते, उधर के बच्चे उधर आ जाते, वहाँ के टीचर कुछ उधर आ जाते, इधर के उधर जाते, ये दिखा सकते हैं। इसको बोलते हैं फंक्शनल MOU। फंक्शनल MOU होना। और क्या होता है, बहुत सारे लोग ज़्यादा MOU मत करो, कोलैबोरेशन फेक हो जाते हैं, उनको भी मालूम रहेगा। अभी तुमने देखा होगा NEP का वेबसाइट, तो जो आंध्र प्रदेश में एक रेड्डी बोल के कौन सा तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो हम पढ़े ब्लैक लिस्ट क्यों कर दिया, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन फेंक दिया एक इंडस्ट्री का MOU है वो क्या करते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन, वो जो आपका डिटेल्स दिया है उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करते और उसके ऊपर जस्टिफिकेशन पूछते हैं ये ऐसा ऐसा तुम्हारा क्या कहना है। और अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दिए तो आपका कॉलेज ब्लैक लिस्ट में जाए, मतलब वो कॉलेज ब्लैक लिस्ट में ऐसा है। वो क्रॉस वेरिफिकेशन करता है, कौन सी भी चीज़ फेक नहीं करना, इतना रखो जितना है उतना ही दिखाओ, मगर कौन सा भी चीज़ फेक मत करो। ये NEP का कहना है, उनको सब कुछ मालूम रहता है, सब कुछ मालूम है। मैं अभी जो बोला कि तुम नेट पे डालो सब कुछ मिलेगा, मेरा जो बायोडाटा नेट पे डालो सब कुछ मिलेगा, ऐसा रहता है। इसलिए फेक कुछ भी मत करो। तुम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो, उसका एक फॉर्मेट बनाओ, वो यूनानिमस फॉर्मेट होना चाहिए। और आपको बैक डेटा भी बनाना है तो ही बना लो, लेकिन उसमें अटेंडेंस रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए। और उसका आउटकम, वो फंक्शन का आउटकम क्या है ये सबको मालूम होना चाहिए, वो रिपोर्ट में आउटकम आना चाहिए। वो जो NEP है आउटकम के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है, ये NEP भी आउटकम के ऊपर ही फोकस कर रहा है, इसलिए आउटकम के ऊपर ज़्यादा जोर। और ये जो रहते क्वेश्चन जो रहते हैं ना, टीम टू टीम ये डिफरेंट रहता है, उसके मन में क्या आएगा ये बोलने से। हमारा जो चेयरमैन है उन्होंने 24 जितना देर वहाँ पर रहे, रात को पहले दिन 9:30 बजे चालू किया, दूसरे दिन 8:30 बजे रात को उन्होंने ख़त्म किया। 11 बजे हॉस्टल का विजिट था, वो ख़त्म किया। और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखा, रात को 2:30 बजे रिपोर्ट उन्होंने हैंड ओवर किया, फिर चले गए। ये वहाँ पर उन्होंने इतना ही बोला
वो कॉलेज के बारे में कुछ नहीं बोलते, लेकिन इतना ही बोल दिया उन्होंने, एक बोला वहाँ पर हमारे कॉलेज में केमिस्ट्री थोड़ा दौड़ता है, मैं सबको शुरू बोल दौड़ता मतलब एक्टिव है, मैं भी वहाँ से हूँ, हमारे IPSC कोऑर्डिनेटर NEP केमिस्ट्री से है। मैं ये आप सबको अपील करूँगा, जो भी NEP का ग्रेडेशन रहता है कौन से भी कॉलेज का देखो, ये सब साइंस के जो आदमी है उनके ऊपर बहुत सारा रहता है। साइंस तो कुछ भी समझ लो, उसका आर्गूमेंट करो, क्या करना है करो, लेकिन साइंस सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर ज़्यादा करें, क्योंकि ये UGC के लिस्ट, ये स्कोपस इंडेक्स, ये इंडेक्स वो उनको ही रहता है। इंग्लिश लिटरेचर या दूसरा लिटरेचर उसमें स्कोप ज़्यादा नहीं रहता, और दिखाते क्या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो गया, वो क्या दिखाएंगे तुम्हें, क्या बोलोगे, वो आपका काम है, वो उन्होंने डेवलप किया रहता है, आप खाली गाइड कर सकते, एक लाइन में लिख सकते हो, वे आर गाइडिंग, नथिंग मोर। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, particularly from the, I want to make more emphasis on the science faculties. You have to focus particularly on the research and need-based research. They are not expected very high research. तो हम तुम्हारे गांव में, तुम्हारे कॉलेज में जो है उसके ऊपर ही काम करो। वो कौन से लोग बोलते हैं कि वहाँ पर वो काम चल रहा है, हम वहाँ पर सैंपल भेज दिया, उसका डिटेल्स, वो उसके ऊपर रिलाई नहीं करते, बिलीव नहीं करते। तुम्हारे कॉलेज में जो वस्तु है, तुम्हारे जो डिवाइसेस है, उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर जितना काम करना है काम करो और पब्लिश करो। रिसर्च के ऊपर बहुत सारा फोकस करो, और उसके बाद मैं बोलता ज़्यादा हूँ। Is there any other query or question which you want to ask, sir? Thank you so much, sir. It was a great privilege to listen to your talk, and I must say that you are having tremendous knowledge not only on NEP but NEP too. And you expressed your thoughts in a very simple, interactive and interesting manner. It is well said that the whole purpose of education is to turn mirrors into windows. Now I request our principal sir to present memento to our resource person, a respected Digvijay sir. Memento, which is a symbol of love, respect and gratitude. Thank you so much, sir. Now I invite Professor Manjari Singh ma'am to propose vote of thanks for this session. Manjari Singh ma'am. Respected dais and all the participants, good afternoon to all of you. I am Manjari Singh and I feel privileged to got this opportunity to propose vote of thanks to respected Digvijay sir. Sir has started his lecture with 4 objectives of conference, and then he gave brief scenario of Indian education in the world. Then he briefly explained about the older universities and ancient universities of India such as Nalanda and Dakshina. Then he explained about Gurukul education system. Then he started talking about scenario before independence. He told us about the Hindu college, which was the first college in India established in 1817 in Calcutta. Then he also explained historical and chronological background of universities and colleges in India. Then he talked about after independence policies which was started in 1948. Then the first NEP in 1964, second in 1986. Then he also talked about right to education amendment in 2002. Then he talked about NEP 2020, which was started from 2014 under the supervision of K. Kasturi Ranjan sir. Sir, you told us to focus on the outcomes of any subject or building a program. Whatever program we start, first we have to think about its outcome. Sir, you also said quality is never be a destination.
it is a continuous process. Then you said about to concentrate or focus on value-based education system. Then you told us about salient features, multidisciplinary 4-year UG programs. Then you gave the importance of research and development committee and research advisory committee in NEP. And your talk was very easy and you're interactive and you beautifully explained everything, sir. Thank you. Thank you very much, sir. नई अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो विषय सर का आज था, उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से कोशिश किया। और शिक्षा नीति में इतने अधिक चर्चाओं के विषय हैं कि मैं चाहूँगा कि सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्हाट्सएप में भी 20-25 पेज का पूरा डिटेल है, तो जरूर पढ़ना चाहिए। अभी जिन कॉलेजों में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कोर्सेज प्रारंभ हुए हैं, अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कों को आगे क्या पढ़ाना है। हम लोगों ने जैसे भी निर्देश हुआ तो कोर कोर्स रख दिया, उसके बाद में जैसा समझ में आया कि एनसीसी पढ़ेगा, एनएसएस पढ़ेगा, रेड क्रॉस पढ़ेगा, वैल्यू एडेड कोर्स पढ़ेगा, पर वो सब प्रैक्टिकल में नहीं हो रहे हैं। और एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस है कि प्रैक्टिकली नॉलेज बच्चे को हो, ताकि एजुकेशन पूरा होने के बाद वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो, ये मंशा है। हो सकता है कि धीरे धीरे इस पर अमेंडमेंट जो यूनिवर्सिटी में अभी फिर से ऑर्डिनेंस में कुछ कमियां थी, उस पर चर्चा हुई, तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा उसमें सुधार भी होगा। 23,000 तक 23,000 बोला ना अपने डॉक्यूमेंट, 20,000 कल्पना कर सकते हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि 1 साल का अगर आपने रिकॉर्ड रखा होगा तो 20,000 हो जाएगा। इतने डॉक्यूमेंट हैं, बस प्रॉपरली उनका सेंट्रलाइज करके अपलोड करने वाली बात है। जो हमारे नेक के कोऑर्डिनेटर और सभी क्राइटेरिया, हमने सर सभी 7 क्राइटेरिया की एक टीम भी बनाई है जो 5 साल है, और IPEC का 9-10 प्रोफेसर की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा स्टाफ नेक के प्रक्रिया को समझे। पहले 2-4-5 पोर्टल लेते, पर इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है, काम होगा या नहीं होगा। जो SSR है उसका ज़्यादातर 97 पेजेस तक जा सकता है। उसका प्रत्येक मतलब हर एक क्राइटेरिया का उसका जो एक एक पॉइंट है उसमें कितना वर्ड में लिखना है, उसमें कहाँ पर 200 है, तो वो ज़्यादा SSR 97 पेज का होता है। लेकिन सपोर्टिंग डाटा तो कितना भी अटैच कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, उसमें कोई फाइल है वहाँ पर लिमिटेशन है। लेकिन जनरली किसी के कहाँ पर भी अटैचमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उसमें हम लोग अपलोड करें। तो अटैचमेंट का आप जो ड्राइव करेंगे उसका लिंक वहाँ पर पेस्ट करना है। इसलिए आप बोले कि इतना डेटा कैसे का जाएगा,
वो आप ड्राइव करेंगे, उसका लिंक उसको दे दिए वेबसाइट में। तो हमें एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ नेक के संबंध में जानकारी मिली और आगे 1 साल का समय है सर हमारे पास, तो हो सकता है आपका ये और आना हो, तो आना जाना लगा रहेगा। हम आपके कॉलेज का विजिट करेंगे कि A++ कॉलेज का भी हमने विजिट किया। धन्यवाद आप सभी को। केमिस्ट्री विभाग दौड़ रहा है बता रहे, हमारे यहाँ भी चल रहा है, तो दौड़ेगा। सबसे ज़्यादा पूरी नेक या जो रिसर्च एंड प्रोजेक्ट और आपके पेटेंट में सबसे आगे विभाग केमिस्ट्री ही रहता है। तो स्वाभाविक है अभी जहाँ जहाँ कुछ कॉलेजेस में पेटेंट हुए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, तो साइंस डिपार्टमेंट खुली है। 2 करोड़ तक का प्रोजेक्ट साइंस कॉलेज में साइंस के ही टीचर हैं। अब कॉमर्स में कहोगे कि प्रोजेक्ट लाभ कहाँ से लाए, क्या लाभ? हम तो ये देखते कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे, खर्चा कम हो, फायदा ज़्यादा हो, और दूसरे फायदा कम हो, मेरे भी ज़्यादा हो। दूसरा कैसे व्यवसाय में आउट हो जाए, मैं ही रहूं, ऐसा कॉमर्स में होता है। कैसे प्रोजेक्ट बनाए कि इसको पैसे बाहर करें। आर्ट्स में भी अभी है, इतिहास में भी बना है प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट तो इकोनॉमिक्स में भी हुआ, कॉमर्स में भी हुआ है। साइंस के टीचर और ये सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी समय है, कोई प्रस्ताव जरूर भेजिए। धन्यवाद सर आपको। Now I request principal sir to present shawl to a resource person, respected Digvijay sir. मैं अभी इनोवेटिव ये देखा है यहाँ पर, ये एक जो मोमेंटो एक बार देना पड़ता है। अभी मैंने इनोवेटिव यहाँ से सीख लिया, एक ही बार शाल श्रीफल वगैरह नहीं देती, हमारे यहाँ पर एक ही बार दे देती। Thank you everyone for your patience listening and valuable time giving us. Thank you so much. एक ही मिनट लेता हूँ आपको, एक ही इम्पोर्टेंट मैसेज दूंगा, और आपको A++ कॉलेज की ओर मुड़ना है तो मैं इतना ही बोलूँगा, हमारे कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाओ, यहाँ वहाँ से IPSC में जाके NEP के जो डॉक्यूमेंट है उसका डाउनलोड कर लो और उसके हिसाब से काम कर लो। DVB वहाँ से चालू कर दो तो आपको 100% अच्छा ग्रेड, मतलब A++ के आगे भी जा सकते हो, क्योंकि बहुत स्कोप है। अभी 1 साल आया प्रिपरेशन के लिए, और सर ने बोला कि अभी कमेटियाँ वगैरह बनाना है, वो दिखाओ, पहले 5 साल पहले ही बनाए हैं, अभी बनाए तो अच्छे नहीं, पुराना है और वो रेगुलर हर साल का भरना रहता है, तो वो कम्प्लीट हो। ये इतना कर दो, बाकी आपको अच्छा नहीं बहुत अच्छा मिलेगा। मैं सबको ही सुबह बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे कॉलेज का कैंपस है, एक किला है, मैं अपने प्रेजेंटेशन में बोला, उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट का फंड्स रहता है, उसका सेव करने के लिए कुछ नियम है, तो उसके लिए आप प्रयत्न करेंगे अच्छा होगा। Thank you so much.